Now we move on to the data load 3, which is basically a third kind of task that we normally manage in the data loading. So we discuss first task as that how basic small data can be loaded by using SQL loader. Then we done the second task basically, which means that how 40,000 or 50,000 or more than that data can be loaded by using SQL loader. Well, now we move on to the third task, in which we will use executing data loading for material and data migration files to database. So how we can manage these ones? First of all, we will execute SQL loader command to load the data. So these basically commands are normally done with the help of batch file, and that recently we have done these things. So what exactly happened here, that we run these command outside the database and we run these successfully with the help of material.batch. So directly we can run this file, or we can just put these files with the help of user ID and password. So based on this one, we will manage according to the requirement of the various options, and based on this one we learned that how data was loaded. So basically again, files are normally come up with the CSV file or XML file or CSV as well. So we load the data into the database. So basically we have load the data into the TMP material. So in the TMP material, let's see that what kind of data we have loaded. So we follow just few columns like BD SKU, comma BD DESCRIP from TMP underscore material. अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा डाटा आता है, और ये पर्टिकुलर डाटा हमारे पास इस फॉर्म में मैनेज होता है कि हम कौन सी कितनी रोज़ को कितनी फॉर्म में इसको मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये ऑप्शन आती है तो हम इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलरली कितने रिकॉर्ड्स आते हैं। लेट्स फॉर वी कैन से दैट रो नम वेयर नो नम इज़ लेस दैन इक्वल टू 25 कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारे पास डाटा की इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में आती है। इसको अगर हम सेव कर लें, स्लैश करें, एग्जीक्यूट करें, तो हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो रो नम की आती है। इसको हम करेक्ट कर लें, नम की बजाय हम इसको रो नम लिखें। दोबारा इसको रन करेंगे तो इस पर्टिकुलर टास्क में हमारे पास अगर आप देखें कि डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं कि इस फॉर्म में पर्टिकुलरली हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इस डाटे को देखा जाता है इस फॉर्म में, इसको एनालाइज किया जाता है, और फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि इस टेम्प डाटे को हम मूव करके एक्चुअल टेबल में कैसे मूव करेंगे। तो दिस इज़ नॉर्मली हाउ द थिंग्स आर डन व्हेन वी लोड द डाटा एंड व्हेन वी कैन मैनेज to load the data into the temporary tables, and how we can move into the actual table, maybe by using the direct load.